उपादेय जो बातें थी उनको उन्होंने स्वीकार करके अपने जो प्रयोजन द्वय हैं, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण और रोगी व्यक्ति का रोग परिमोक्ष, इन दोनों प्रयोजनों की पूर्ति के लिए षड दर्शन का जहां जैसा उपयोग उनको लगा वैसा उन्होंने उसका उपयोग किया हो। और उससे आगे चलकर के भी न केवल षड दर्शन के व्यतिरिक्त जो नास्तिक दर्शन है, सर्वथा नास्तिक दर्शन है, ऐसे महर्षि चारवाक का भी उन्होंने अनुगमन किया उतना ही जितना उनको आवश्यक लगा। जब वे आरोग्य के महात्म्य को बताते हैं, स्वास्थ्य क्यों जरूरी है इसको बताते हैं, स्वास्थ्य का आधार ये मनोधिष्ठित शरीर जब है तो इस शरीर को साधन के रूप में प्रतिपादित करते हुए चरक का यह मानना है कि साध्य महत्वपूर्ण है, परंतु साधन के बिना साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो, चाहे कामनाओं की पूर्ति की बात हो, चाहे अर्थोपार्जन की बात हो, या फिर धर्म का परिपालन हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति के लिए आरोग्य मूल है और आरोग्य शरीर का चाहिए। और इसीलिए कुमार संभव में जब उमा तपस्या कर रही होती है शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए, और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसकी परीक्षा लेने के लिए जब स्वयं शिव एक ब्रह्मचारी बटुक का वेश धर्म उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपिक्रियार्थम सुलभम समित कुशम जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणिते, और ये कहते हुए कि आपकी इस तपश्चर्या के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आपको मिल रही कि नहीं देवी, क्योंकि तपस्या तो तपस्या अपने स्थान पर है, परंतु शरीर संचालन भी आवश्यक है। और अंतिम चरण उस सूत्र का उन्होंने कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। उसी बात को भी आचार्य ने यहाँ शारीर स्थान में उन्होंने कहा कि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। तो शरीर का महात्म्य, शरीर के पालन का महात्म्य, स्वास्थ्य का महात्म्य आचार्य चरक स्थान स्थान पर कहते हैं, जिसको महर्षि चारवाक ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत कहते हैं कि भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। तो वैशिष्ट दे के चरक ने कि चारवाक के पहले चरण का तो उपयोग किया उन्होंने, लेकिन जो दूसरा चरण है जिसमें वो अनात्मवादी पुनर्जन्म विरोधी होते हैं, उस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इतना किया कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इसका मंतव्य, इसका हार्द लेकर के उन्होंने शरीर का महत्व, स्वास्थ्य का महत्व तो स्वीकार किया, परंतु भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, इस विषय को उन्होंने नहीं लिया। तात्पर्य यह है कि षड दर्शन या नास्तिक दर्शन सहित सभी तत्कालीन प्रचलित दर्शनों में से आचार्य ने जो कुछ बातें ऐसी जो उनके अपने तंत्र के प्रयोजन के लिए आवश्यक उपयोगी लगी, उनको उन्होंने ग्रहण किया, स्वीकार किया, और न केवल स्वीकार किया, उसको भी उन्होंने प्रतिसंस्कृत किया। उनकी अपनी आवश्यकता के अनुरूप कहाँ कैसा उसका उपयोग होना चाहिए, उसका उन्होंने प्रकटीकरण करते हुए अपने शास्त्र में स्थान दिया। ये एक चरक का वैशिष्ट्य है। यानी आज हम भी सोच सकते हैं, देख सकते हैं, इससे प्रेरणा लें कि आज के समय में प्रचलित जो भी बेसिक साइंसेज हैं, उन बेसिक साइंसेज का, या यूं कहें कि जो समवर्ती अन्य चिकित्सा विज्ञान हैं, उन चिकित्सा विज्ञानों में उपलब्ध कोई ऐसी प्रक्रिया, ऐसा द्रव्य, ऐसा सिद्धांत, ऐसा व्यवहार जो हमारे प्रयोजन की पूर्ति में सहायक होता हो, उसका ठीक वैसा का वैसा उपयोग न सही, लेकिन अपने शास्त्र के संपोषण के लिए, अपने शास्त्र की संपुष्टि के लिए कैसे कहाँ हम उपयोग करें, ऐसा मार्गदर्शन आचार्य चरक हमें देते हैं कि समसामयिक अन्य विज्ञान धाराओं का हम अपनी जरूरत के अनुसार कैसा उपयोग करें, कहाँ उपयोग करें, कितना उपयोग करें। ये जो एक वैशिष्ट्य है उनका, उसको हमें आज के समय में, आज के संदर्भ में भी स्वीकार करने की जरूरत है। चरक संहिता का जब आद्योपांत अनुशीलन करते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति ने तो केवल पल्लवग्राही अध्ययन किया उसका, फिर भी यह बात ध्यान में आती है कि महर्षि चरक ने चरक संहिता में जो विषय संयोजन किया है,
उस विषय संयोजन की विशेषता आप देखिए। यानी जब कोई चरक का स्वाध्याय करने के लिए उतरेगा, पहले दिन से उस व्यक्ति को ऐसा लगने लगेगा कि मैं चिकित्सक बनने जा रहा हूं। तो जहां कुछ मूल सिद्धांत भी उन्होंने बताना शुरू कर दिए, कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य, तीन दोष, उनके भेद, उनके स्थान आदि का उल्लेख जब करते हैं, तो पहले अध्याय से एक तरह से आयुर्वेद का व्यवहार ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। और जो विषय विन्यास इन्होंने सूत्र स्थान का किया है, उस सूत्र स्थान के विषय विन्यास में भी जो उन्होंने कहा कि औषध स्वस्थ निर्देश कल्पना रोग योजना, इस क्रम से ये चार चार अध्यायों का जो चतुष्क की योजना की है, चरक का ये वैशिष्ट्य किसी अन्य संहिता में हमको प्राप्त नहीं होता है। एक विषय विशेष को केंद्रित करके, लक्ष्य करके, उस विषय से संबंधित सारी सामग्री को, उससे संबंधित सारे विषय को एक जगह एकत्र कर देना, ये चरक का वैशिष्ट्य है। और आप देखिए कि पहला पहला जो उन्होंने नाम उसका दिया औषध, पहला औषध चतुष्क, उस औषध चतुष्क के अंतर्गत जो ही दूसरा अध्याय आता है, तो भले ही हम कोई औषध विशेष की रोगानुसार भला कल्पना न करें, लेकिन आहार कल्पनाओं के माध्यम से विविध प्रकार की यवाओं का उल्लेख करके उन्होंने कहा कि केवल डायटरी प्लान करके हम विविध प्रकार के रोगों पर अंकुश, रोगों का प्रतिकार हम कर सकते हैं। तो एक चरक का वैशिष्ट्य है और इसी स्थान पर इस विषय को रखना। तो जब हम आद्योपांत हम चलेंगे इसके, तो सूत्र स्थान की अन्य सूत्र स्थानों की अपेक्षा कहने को तो में कहा जाता है कि वाग्भट को सूत्र स्थान में वैशिष्ट्य मिला है, परंतु विषय संयोजन की दृष्टि से विषय का विभाजन करने के लिए जो तरीका, जो पद्धति महर्षि चरक ने अपनाई है, वह अपने आप में एक वैशिष्ट्य रखती है। ये इसकी एक यूनिकनेस है। और ऐसे चार चार अध्यायों का चतुष्क बनाकर उस विषय को लक्ष्य करके, केंद्रित करके उन्होंने विषय का प्रतिपादन किया है, जो अपने आप में एक अनूठा है और ये एक वैशिष्ट्य रखता है। तो क्रम से सूत्र स्थान के अंतर्गत इन विषयों का समाधान करते हुए औषध चतुष्क, फिर स्वस्थ चतुष्क लिया, औषध स्वस्थ निर्देश चतुष्क है कि करणीय अकरणीय क्या हो। और आप ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होता है कि आपने सूत्र स्थान पढ़ लिया तो अब इसको उठा करके रख दीजिए, अब अगला स्थान उठा लीजिए और उस स्थान को पढ़ लीजिए, उसको पढ़ने के पश्चात उसको रख दीजिए, तीसरा स्थान उठा लीजिए। ऐसा कतई संबंध नहीं, ऐसा कतई संभव नहीं है। किसी एक सूत्र स्थान के एक अध्याय के सूत्र विशेष की तो की जो सांदर्भिकता है, उसका संदर्भ है। उदाहरण के लिए मैं ये कहूं, क्या 13वें 14वें सूत्र स्थान के अध्याय में जहां स्नेहाध्याय और स्वेदाध्याय का वर्णन किया है, उसको स्मरण रखे बिना क्या हम सिद्ध स्थान और कल्प स्थान की कल्पना कर सकते हैं? क्या संभव ही नहीं है। और इसलिए इसको सर्वग्राही करके, जिसे हम कहते हैं कि होलिस्टिक, खंड खंड में नहीं किया, संहिता को आपको पूरी की पूरी सामने रखना ही पड़ेगा। कल्प स्थान में कल्पों की सिद्धि के लिए सूत्र स्थान के उन सूत्रों को हमें देखना ही पड़ेगा, उनको स्मरण में रखना ही पड़ेगा। तो चिकित्सा स्थान के अनेक प्रसंगों में भी जहां जहां कहीं पंचकर्म का उल्लेख किया उन्होंने, वहां पर भी निर्देश चतुष्क के अंतर्गत दिए गए सब प्रकार के निर्देशों का ध्यान हमको वहां रखना पड़ेगा। ये एक वैशिष्ट्य है, उनको एक सीक्वेंस बनाया उन्होंने, जो कोई इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। स्थान विभाजन विषय विभाजन के लिए किया उन्होंने, परंतु कोई भी एक सूत्र, कोई भी एक अध्याय किसी दूसरे अध्याय में वैसा ही संदर्भ आने पर वह उतना ही उपयोगी होता है। खासतौर से इस पर मेरा निवेदन करने का ध्यान जाता है। दूसरी बात जो मैं कहूं कि बाकी अन्य संहिताओं के अपेक्षा चारकीय विमान स्थान, ये अपना में यूं कहें कि ये अनेक महानिबंधों का, अपने अनेक थीसिस का आगार है। हमें माने कि चिकित्सा हम दो चीजों पर अगर निर्भर कर लें, सूत्र रूप में एकदम संक्षेप में यदि हम कहें, तो रस विकल्प और दोष विकल्प, रस विकल्प और दोष विकल्प, इन दो बातों पर यदि हम विचार कर लेते हैं, इन पर यदि हम महारत हासिल कर लेते हैं, इनका अनुभव यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, तो ये जो एक चरक की यूनिकनेस है, रस विकल्प और दोष विकल्प, जिसका हर समय हमको चिकित्सा के नेतृत्व ध्यान करना पड़ेगा। आधुनिक चिकित्सा का कितना ही विज्ञान विकसित हो जाए, लेकिन निदान स्थान में कही हुई बात का विस्तार जब चिकित्सा स्थान में करते हैं, करते समय भी हमें
आयुर्वेदीय धरातल पर आने के लिए फिर से रस विमान और दोष विमान पर आना ही पड़ेगा। तो रस विमान, रस विभेद और दोष विभेद, या यूं कहें रस विकल्प और दोष विकल्प, ये जो वैशिष्ट्य है महर्षि चरक का, जो चिकित्सा का आधार बनता है, उसका स्मरण हर चिकित्सक को एकदम कंठाग्र होना ही चाहिए। उसके बिना कोई भी एक चिकित्सक चिकित्सा में साफल्य प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अनेक वैशिष्ट्यों में से, अनेक यूनिकनेस में से जो मुझे लगा कि रस विकल्प और दोष विकल्प। अब रस विकल्प क्या है, दोष विकल्प क्या है, उसमें जाने का अभी समय नहीं है, परंतु जब हम विचार करते हैं तो नव चिकित्सक जो चिकित्सा में उतरने वाले होते भी हैं, उनको भी एक बार रस विकल्प और दोष विकल्प पर अगर ध्यान दे लेते हैं वो, तो उनकी राह चिकित्सा की दृष्टि से सुगम होने को लगती है। आचार्य चरक ने प्रसंग को देख करके संदर्भों में कम ज्यादा करने का भी उनका वैशिष्ट्य है। कहीं एक विध परीक्षा कहते हैं वो, कहीं द्विविध परीक्षा कहते हैं, कहीं त्रिविध परीक्षा कहते हैं। प्रसंग आया तो चतुर्विध परीक्षा भी कहते हैं, और अष्टविध परीक्षा के साथ दसविध परीक्षा का भी उल्लेख करते हैं। और 10 विध परीक्ष भाव ये उल्लेख करके आचार्य ने तो एक बड़ा कैनवास हमको दे दिया कि हम कहाँ कहाँ इन परीक्षाओं के माध्यम से आखिर परीक्षा किसकी करनी है, वह आधार भी आचार्य चरक ने विमान स्थान में हमको उपलब्ध कराया है। तो विमान स्थान के विषय में तुम जितनी चर्चा करें, उसकी अपनी एक यूनिकनेस है। विमान स्थान का हर एक अध्याय, जब हम अभी ताजा ताजा इन्हीं दिनों में हमने देखा, तो ये जो तीसरा अध्याय जनपदोध्वंसनी अध्याय है, हम कल्पना करते हैं तो ध्यान में आता है कि आचार्य ने जनपदोध्वंस से बचने के उपायों में जो उपाय उल्लेख किया, आज जो नए सारे संसार को कुछ नए शब्दों का परिचय इस महामारी के कारण आया, उन शब्द विशेषों का उपयोग आचार्य चरक ने जनपदोध्वंस के प्रकरण में किया है। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं तो एक बहुत नया शब्द जो प्रचलन में आया, क्वारंटाइन, ये शायद इसका प्रतिरूप महर्षि चरक ने जनपदोध्वंसनी अध्याय में दिया हुआ। तो वहां जब सत्यम भूत दया कह करके जनपदोध्वंस में उत्पन्न होने वाले महामारी से बचाव का जब उल्लेख करते हैं, तो उसमें कहते हैं गुप्तिरात्मन है। उस सूत्र समूह का जो 4-5 सूत्र हैं, उसका जो अंतिम शब्द आता होता है गुप्तिरात्मन है। आत्मगुप्ति, अपने आप को प्रच्छन्न कर लेना, अपने आप को छुपा लेना। इसका अगर इंग्लिश अनुवाद करेंगे तो वो क्वारंटाइन ही होने हमको दिया है, वह इसकी विशेषता का प्रकट करने वाला होता है। इसलिए केवल विमान स्थान नहीं, निदान स्थान में भी जब संक्षेप में अष्टौ ज्वरा कह करके छोड़ देते हैं, लेकिन अगर तो चरक संहिता के चिकित्सा स्थान का तीसरा अध्याय, जिसे हम ज्वर चिकित्सा के नाम से जानते हैं, जहां केवल अष्टौ ज्वरा कहकर निदान में उन्होंने संक्षेप में एक वर्गीकरण कर दिया, लेकिन जब हम ज्वर चिकित्सा पढ़ते हैं तो आप देखिए कितने भेद उपभेद ज्वर के वहां कर लेते हैं वो। कहीं दोष के अनुसार, कहीं धातु के अनुसार, कहीं अवस्था के अनुसार, कहीं आशय के अनुसार, कहीं अधिष्ठान के अनुसार, कहीं ऋतु के अनुसार, कहीं आवस्थिक में जो भेद होता है काल के अनुसार। तो इतने भेद ज्वर के करने के बाद उन्होंने इसको जब समाप्त किया है, तो ध्यान में आता है कि चरक चिकित्सा में अगर तृतीय अध्याय चिकित्सा का कोई व्यक्ति ठीक से आत्मसात कर ले, तो देश काल परिस्थिति निरपेक्ष आयुर्वेद चिकित्सा में वह व्यक्ति निष्णात हो सकता है, एक अकेला ज्वर चिकित्सा को आत्मसात कर लेने मात्र से। इतने सिद्धांतों का उल्लेख वहां किया गया है, किस प्रकार की शरीर रचना, किस प्रकार की शरीर क्रिया और किस प्रकार का विकृति विज्ञान उन्होंने ज्वर चिकित्सा में समेट दिया है। तो चिकित्सा स्थान में जहाँ निदान स्थान में जहाँ केवल 8 ज्वर का वर्णन करते हैं, वहां जाकर हम देखते हैं तो 100 से अधिक भेद ज्वर के हमको प्राप्त होते हैं, और हर एक की विशिष्ट संप्राप्ति और हर एक की विशिष्ट चिकित्सा सूत्र उनको देख करके उन्होंने किसी भी परिश्रमी, किसी भी काल के, किसी भी देश के आयुर्वेद चिकित्सक के लिए उसका अपना मार्ग सुगम कर दिया है। ऐसा वैशिष्ट्य चिकित्सा में जब हम कहते हैं कि चरकस्तु चिकित्सक थे, तो इसका वैशिष्ट्य हमको लगता है। चिकित्सा स्थान के अंतर्गत 15वां अध्याय, जिसकी चर्चा शायद कल हो चुकी है अग्नि के संदर्भ में, लेकिन अग्नि के विभिन्न स्तरों का क्या क्या कैसे कैसे रूप शरीर में हो सकता है, आधुनिक दृष्टि से भी हम देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन के जितने स्तर हैं,
उससे कहीं अधिक आचार्य ने गृहिणी रोग चिकित्सा के अंतर्गत बताए हैं अग्नि की स्थिति और किन किन बातों से अग्नि का प्रभाव हो रहा है और किस किस स्थान पर धातु अग्नि और भूताग्नि का प्रभाव स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर, रोगी व्यक्ति के ऊपर, संप्राप्ति निर्माण में और संप्राप्ति विघटन में आचार्य ने जो अग्नि का स्वरूप वहां प्रतिपादित किया है वह देखते ही बनता है। तो एक एक सूत्र गृहिणी रोगाध्याय का मनन करने योग्य होता है और आप ये मानकर चलिए ये सूत्र जब बना है कौन सा कि अग्निमूलम चिकित्सितम, यानी चिकित्सा अग्निमूलक है। तो इस सूत्र को सार्थक करने के लिए, इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए अग्नि प्रकरण जो महर्षि चरक ने चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय में दिया है उसके बिना संभव ही नहीं है ये। तो अग्निमूलम चिकित्सितम ये एक सूत्रार्ध, इसके माध्यम से ये प्रतिपादित होता है कि अग्नि का चिकित्सा में कितना महत्व है। बिना अग्नि विचार किए हुए न आप रोग का निदान कर सकते, न संप्राप्ति निर्माण कर सकते, संप्राप्ति विघटन के लिए न आप औषध कल्पना कर सकते, न औषध मात्रा तय कर सकते, न आहार कल्पना तय कर सकते, न आहार मात्रा तय कर सकते। इन सबका विस्तृत विवेचन वैशिष्ट के साथ गृहिणी रोगाध्याय में महर्षि चरक ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है। इसी प्रकार जब और आगे बढ़ते हैं तो सामान्य चिकित्सा के अलावा जो उसका विष चिकित्सा अध्याय है अपने आप में आज का पूरी तरह से अगध तंत्र इसको इस रूप में हमको उपलब्ध होता है। कितने प्रकार के अगध और विष चिकित्सा के विष के प्रभाव और किन किन स्तरों पर कैसी कैसी चिकित्सा विष की जाए। हो सकता है सुश्रुत इस मामले में थोड़ा कदम आगे भी रहे हो, लेकिन उस काल में भी जिस ढंग से विषय का संयोजन आचार्य ने किया है, स्थावर भेद समझ लीजिए, जावर भेद समझ लीजिए, चाहे खनिज समझ लीजिए, उनका एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव कहाँ किसके लिए कैसा संयोजन चरक के द्वारा जो विष चिकित्सा में किया गया है अद्भुत और एकदम अलौकिक। इसी तरह से अगर ये मैं कहूं तो त्रिमर्मी अध्याय आज के समय में प्रचलित जितने भी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हैं, जीवन शैली जनित रोगों का जो बीज कह लीजिए, उसका वृक्ष समझ लीजिए, त्रिमर्मी चिकित्सा के अंतर्गत जैसा अद्भुत वर्णन आचार्य ने तार्किकता के साथ किया है। हम एक एक प्रचलित आज के रोग को यदि आयुर्वेद के तल पर समझना चाहें तो त्रिमर्मी चिकित्सा अध्याय हमारे लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है। तो उसमें आज जितनी व्याधियां जिनको हम एकदम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज मानकर चल रहे हैं, संसार में जिन व्याधियों का आंकड़ा हमें एकदम चौंकाने वाला और चकित करने वाला और चुनौती देने वाला बना हुआ है, ऐसे उन सारी व्याधियों का समाधान हम त्रिमर्मी रोगाध्याय के माध्यम से कर सकते हैं। जिन हमारे आयुर्वेद चिकित्सकों ने उन अध्यायों पर काम किया है, उन अध्यायों में आई हुई विषय वस्तु का आधुनिक दृष्टि से भी समायोजन का प्रयास करते हुए अपने शास्त्र का संपोषण संपुष्टि करते हुए बहुत यश प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए निवेदन इतना है कि चरक के वैशिष्ट्य का जब विचार करेंगे तो हम आधा एक घंटे में निकाल पाना मुश्किल होता है, या यूं कहें कि इसका एक एक सूत्र, एक एक सूत्रांश अपने आप में वैशिष्ट्य रखता है। क्यों रखता है कि इसमें किसी का अनुकरण नहीं है, सारा सब कुछ उनका अपना मौलिक है। और इसके प्रणयन में जिन जिन स्तरों का समावेश हुआ है, चाहे वो अग्निवेश के द्वारा पुनरुत्थान से प्राप्त उपदेश का समावेश हो या फिर उसके लगभग 800 साल बाद महर्षि चरक ने जो उसका प्रतिसंस्कार किया हो, तो उन समसामयिक विषयों का इसमें जो समावेश हुआ, ये एक काल बाह्य वस्तुओं का, काल बाह्य विषयों का इसमें से निरसन होना और समय सापेक्ष कुछ नए विषयों का संयोजन होना, ये प्रतिसंस्कार का वैशिष्ट्य रहा। और ये किसी भी शास्त्र को अपडेट करने के लिए जितना आवश्यक होता है, तो मैं उन स्तरों का यदि विचार करूं तो पुनर्वसु आत्रेय के द्वारा दिए गए उपदेश को महर्षि अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र में संकलन किया। लगभग 800 साल बाद जब चरक हुए, उन्होंने उसका पहला प्रतिसंस्कार करते हुए काल सापेक्ष विषयों का समायोजन, काल बाह्य कालातीत विषयों का निरसन करते हुए एक नए रूप में चरक संहिता हमारे सामने रखी। काल के थपेड़ों से किसी कारणों से जो कुछ उसमें खंडन हुआ, उसकी पूर्ति करने के लिए लगभग 800 साल बाद फिर से दृढ़ प्रकट हुए और उन्होंने इसका पुनः प्रतिसंस्कार किया
और वह प्रतिसंस्कृत चरक संहिता बाद में चलने लगी। समानांतर अप्रतिसंस्कृत चरक संहिता भी चलती रही, लेकिन प्रतिसंस्कार के पश्चात लगभग 12वीं-11वीं शताब्दी में जब चक्रपाणी की संस्कृत टीका करते हैं, तो चक्रपाणी टीका आयुर्वेद दीपिका टीका चक्रपाणी के द्वारा की गई, ये अपने आप में एक प्रतिसंस्कार है। आज हम सुनते आए हैं हमारे गुरुजनों से भी, चरक के हार्द को यदि समझना है तो चक्रपाणी टीका का अभ्यास करना ही पड़ेगा, और चरक का मर्म उसी ने जाना जैसे चक्रपाणी टीका को जाना है। तो या यूं कहें कि जो एक प्रतिसंस्कार चरक ने किया, दूसरा प्रतिसंस्कार दृढ़बल ने किया, तीसरा प्रतिसंस्कार लगभग उत्तरे कालांतर में चक्रपाणी के द्वारा आयुर्वेद दीपिका टीके का माध्यम से हुआ, वह अपने आप एक प्रतिसंस्कार है। और इस शताब्दी में या इस सहस्राब्दी के बीते 700-800 वर्षों में, लगभग 1000 साल में, उस चक्रपाणी टीका के माध्यम से चरक के हार्द को समझ करके ख्यातनाम चिकित्सक हुए हैं। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में संस्कृत का ज्ञान कुछ अल्प और अल्पतम होते जाने के कारण अब चरक की चक्रपाणी टीका को समझने वाले लोग भी नहीं रहे। तो इसी शती के पिछले दशक में आयुष मंत्रालय की परियोजना के तहत प्रोफेसर बनवारीलाल गौड़ साहब ने उस आयुर्वेद दीपिका टीका का जो हिंदी अनुवाद किया है, तो मेरे जैसे अल्पज्ञ जिनका संस्कृत का अभ्यास कम है, उन व्यक्तियों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। और वो जो सूत्र जिस मर्म को पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश को दिया, उसके हार्द को, उसके मंतव्य को, उसकी आत्मा को ऐषणा टीका के माध्यम से गौड़ साहब ने हमारे सामने रख दिया। तो मैं ये तो कहता हूं कि जैसे एक प्रतिसंस्कार चरक ने शुरू किया, प्रतिसंस्कार की वह श्रृंखला चक्रपाणी तक होते होते ऐषणा टीका तक आई है ये। और ऐसे उन विषयों को, चाहे वो सामान्य विषय हो चाहे विशेष विषय हो, उसकी समझ विकसित करने का आधार ऐषणा टीका के माध्यम से आज हमारे सामने आया है। तो जिन स्तरों से गुजरते गुजरते चरक संहिता, उसकी टीकाओं का प्रचलित स्वरूप जो आज हमारे सामने उपलब्ध है, उस उपलब्ध संहिताओं के ज्ञान टीकाओं के माध्यम से चरक की इन संक्षेप में निवेदित की गई मेरी कुछ वैशिष्ट्य हैं, उनको ध्यान करते हुए इन्हीं के समानांतर, ये इयत्ता नहीं है, ये स्वयं चरक भी मानते हैं, तो ये स्वयं कहते भी हैं ये, यानी इतना उनकी साफ गोई और उनकी एक वैज्ञानिक ईमानदारी समझ लीजिए। जब ये पंचाशर महाकषाय का उल्लेख करते हैं तो साफ साफ कहते हैं कि भाई ये आविष्कृत तम है, ये हमने इतने खोजे हैं, ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये कोई इयत्ता नहीं है, ये हमने केवल व्यवहार सौकर्य के लिए और अपने अनुभव में जितनी बातें आई हैं उतना हमने आप लोगों के सामने रखा है। इसको आधार बना करके इसी तरह से अन्य अनेक प्रकार के महाकषायों का वर्णन, उल्लेख, संयोजन हम कर सकते हैं, ऐसा मार्गदर्शन देने की प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन जो अल्पमती हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प परिश्रमी हैं, उनके लिए ये एक व्यवहार सौकर्य के लिए उनके लिए पर्याप्त भी है, उसके माध्यम से अपना वो समभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसी एक साफ गोई के साथ उस विषय को आचार्य के द्वारा रखा जाना आने वाले वैज्ञानिकों के लिए मार्ग प्रशस्त करना भी है। जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो परिश्रमी हैं, जो अनुभवशील हैं, वे इस विषय को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो एक मार्ग दिखाने का काम भी आचार्य चरक ने उस स्थान पर किया है। मुझे सीमित समय में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और पूना के एक एनजीओ के माध्यम से गर्भ संस्कार का एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलता है, 9 बजे से उसकी भी क्लास शुरू होनी थी। इस सीमित समय में अपने सीमित मति से जितना कुछ मैं समझ पाया तात्कालिक रूप से, उतना मैंने इस मंच पर निवेदन किया है। मुझे नहीं मालूम कि इसकी मंच की गरिमा के अनुरूप ये पर्याप्त होगा कि नहीं होगा, परंतु फिर भी मुझे बाल बुद्धि समझ करके सब विद्वत वरेण्य मुझे क्षमा करेंगे और मैं उस सत्र से फ्री होकर के फिर इसके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। ये मान मुझे देते हैं, इनका स्नेह है पवन जी का, मैं इस सम्मान का हकदार होंगी कि नहीं, परंतु मैं आभार मानते हुए इस मंच को प्रणाम करते हुए विदा लेने के लिए अनुमति चाहता हूँ। कहा शर्मिंदा कर रहे हैं गुरुदेव, ये मंच आपका, हम आपके, सभी कुछ आपका है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पते, मैं तो केवल आपका सेवक मात्र हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। आपने कितनी ओजस्वी वाणी में और हम लोगों को मार्ग निर्देशित किया। अग्निहोत्री जी। सभी को प्रणाम, विशेष रूप से बंधुवर वैद्य कमलेश
शर्मा जी को, क्या कह दिया आपने आखिर में? ऐसे कहीं होता है? मंच का मान क्या है? मंच क्या होता है? क्यों चरक नहीं के है भाई, सामने, इसमें क्या बात है? चरक के सामने और आपके इससे सामने। दृष्टता क्या जब है अग्निहोत्री जी? मंच के घटक आप हैं, हाँ अगर हाँ, मैं हूँ। मंच की शोभा आपसे है, मंच अस्तित्वहीन है अगर आप नहीं है। और जहाँ चरक की चर्चा हो रही है तो शीर्षस्थ तो चरक है, उनकी कृतियां है, हमारी चरक संहिता है, उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। ये वातावरण तो कुछ अनन्य हो गया, ये वातावरण IRES नहीं रहा। इसको आप समझिए, कल से हम लोग एक दूसरे ही सुगंध में विचरण कर रहे हैं। एषणा के प्रतिष्ठापक प्रोफेसर रमाई लाल जी का कल आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अब यह परंपरा 21 शक्तिपीठ तक जाएगी। एक सरस्वती के 21 पुत्र जब वरद पुत्र अपना यहाँ पर भेजेंगे तो आप तो फूल बिखेर रहे थे। 51 सर, 51 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ के 51 सरस्वती के वरद पुत्र जब जुड़ेंगे तो आप तो फूल बिखेर रहे थे, आप तो फूल झाड़ रहे थे। आप कह रहे थे कि मंच की मान तो आपसे है। देखिए, नीते रत्ने भाजने को विशेषा, नीते रत्ने भाजने को विशेषा। आप भाजन में आप कुछ रख देंगे तब उसका मान बढ़ेगा। तो आपका किन शब्दों में कहें, ये लगता है कि प्रांशुलभ्य फलम लोगात उद्भाव भावना भी शायद छोटा पड़ गया। आपने अपनी विद्वता कम से कम शब्दों में दिखा दी। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, चरक पर चर्चा कर पाना, चरक संहिता पर चर्चा कर पाना, महर्षि चरक पर चर्चा कर पाना, ये ऐसा उपलम्ब नहीं किसी को करना चाहिए, संभव ही नहीं है। बट हम लोग अपने मनोविरोध के लिए कुछ करते हैं तो इसका दूर तक सूचना जाती है, अच्छा लगता है। और ये प्रतीत होता है कि आयुर्वेद अगर हम कुछ जान पाए तो महर्षि चरक के ही योगदान से, हमारे बृहत्त्रयी के योगदान से, लघुत्रयी के योगदान से, और आपके आज के आधुनिक चरक और हमारे जो जिनको मानद उपाधि मिली हुई है, प्रोफेसर रमाईलाल जी के साथ हमारे प्रोफेसर गुरु साहब हो गए, प्रोफेसर शुक्ला जी हो गए, प्रोफेसर ज्योति मित्र जी हो गए, इन सबने जो हम लोग और मार्गदर्शन किया है, आज भी कर रहे हैं, इससे हम सब लोग पुष्पित और पल्लवित हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बड़ा। आगे भी आप ऐसे ही अपना सहयोग बना रखेंगे। अवश्य, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, ओवर टू पॉइंट शर्मा जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं एक और संहिता के विद्वान, मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है, कमलेश कुमार शर्मा जी के आशीर्वाद माँ सरस्वती के वरद हस्त है और धारा प्रवाह चालू होते हैं। ऐसे ही एक और माँ सरस्वती के पुत्र को मैं आह्वान करने जा रहा हूँ। I would like to invite Professor Ramadas P from KOLLAM. He is also Saraswati Putra, and more than that, beyond that, he can explain his thoughts in Sanskrit also. मतलब वो पाणिनि पुत्र भी कह दीजिए। सरस्वती पुत्र है तो वो व्याकरणाचार्य या व्याकरण में जो अपना रखते हैं वो पाणिनि पुत्र भी साथ साथ हैं। स्वागत है प्रोफेसर रामदास जी, आपका स्वागत है। और मैं रामदास जी से एक आग्रह करूंगा। आई वुड लाइक टू मेक ए रिक्वेस्ट, ऑन 12th he will be acting as moderator in Sanskrit. अवश्यम 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 करिष्यामि, अवश्यं करिष्यामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य मम तन्त्रयुक्तिः अत्र विषयः। चरकस्य तन्त्रयुक्तिः इति वक्ष्ये किञ्चित् वक्तुं शक्यते। कुतः चेत् यद् चरकेण प्रतिसंस्कृतं भागं, that means the part that which is redacted by Charaka is up to 17 chapter of Chikilsastra. If you just verify that part, you can find out it is purely on the basis of discussion between the teacher and student. It's a very beautiful conversative part. And you see in Vimanasthana, Charaka is very clear. The previous great speakers, great scholars, they told that Vimanasthana is one of the classic edition of Charaka. So because Visheshena Manayadi Anena Idi Vimanaha, whatever be the specific manas, measures, that which has to be, a Vaidya has to acquire, that which is explained in Vimanasthana. He put there Vada Marga. It automatically shows us that in olden days, the tantras were established or taught for the students or is in prachara on the basis of debates, actually, discussions, vada. After that only, the textual method would have been taken into existence. That is the reason
Charaga's edited part, the Tantra Yukti is silent. There the Vada Marga is only there. But if you see Dridabala's edition, most of the chapters are Sloga Nibaddha. It is mostly in Sloka, you can find out. Narrative style. Very few places the Gadya comes, very few places the debate or the Charcha comes, the Vada comes. But the Charaka edited part is mostly. That means if we think that Agnivesha is the advisor, Atreya is the advisor and Agnivesha is the writer and Charaka is the editor, the part edited by Charaka is really the real creation of the Atreya. The remaining Dridabala would have been taken in such a way, it is Samuchaya. That means he would have been taken from other books and found out that this is most suitable for the subject with the support of the Tantra Yukti and would have been added the remaining chapters in Chikitsasthana and the Siddhisthana and the Kalpasthana at the end, and he put the Tantra Yukti at the end of the chapter. Otherwise, if it would have been the creation of Atreya or Agnivesha or Charaka, it would have been the Vimanasthana. It should not be at the end of the textbook because Tantra Yukti is also one of the very important part to be learned by a Vaidya to understand a textbook as per the textual methodology adopted in Charaka Samhita. This is the very first introduction I can give. And moreover, in supportive that one, if you check some of the Vada Marga like Prayojanam, Samshayam, Arthavati, Drishtanda, Sambhava are there in Tantra Yukti also. Suppose this is the creation from the beginning, if the Tantra Yukti is edited over there, the same topic should not be discussed twice, it will be Punarukta Dosha. So certainly the part edited by Charaka is mostly the real creation of Atreya and written by Agnivesha, and the remaining Dridabala, whatever he has done, he would have been searched so many books there and quotations, and with the support of Tantra Yukti would have been added the other part. This is the inference we can get from these points. Okay, and coming to the Tantra Yukti, will you allow me to share? Not allow, you are authorized already. Yes, okay. Can you see now? Yes. So this is actually in Word I have done. Okay. Tantra Yukti, it starts from Adhikarana Tantra Yukti. You know that Yam Adhikartya Shastram Pravartate is the definition given by Charaka. And if you take the Nirukti of Adhikaranam, Adhikriyate iti Adhikaranam. If you take the Panini Vyakarana, there are some sutras. Samasyate. When the Samasa starts, he will say Samasyate. So from there, nearly 200 sloka, the word Samasyate should be taken to understand the meaning of each sutra explained after that, till the end of Samasa Prakarana. Same idea is adopted in Ayurveda in such a way that Adhikarana Tantra Yukti. When you go for Adhikarana Tantra Yukti, how we can divide this Adhikarana? You can go for Shastra Adhikarana, you can go for Sthana Adhikarana, even you can go for Adhyaya Adhikarana, you can go for Prakarana Adhikarana, you can go for Sutra Adhikarana, even Vakya Adhikarana. Up to that subtlest part, the Adhikarana can be taken, and each word has to be explained with reference to that context or Adhikarana. So the Adhikarana Tantra Yukti is the basic base of all Tantra Yuktis. If you wanted to apply any other Tantra Yuktis, you should master the Adhikarana. That means without telling the reference, if anybody comes in front of us for the meaning of any sloka, we are not supposed to explain the sloka to them. We should get the reference, which sthana, which chapter, which sloka number has to be taken, and we should have the awareness of the Adhikarana. Otherwise, the explanation will not be complete. This Adhikarana Tantra Yukti is important in understanding the textbook. This is very, very important with reference to the context from Shastra to Vakya Adhikarana. This much divisions can be done in Adhikarana Tantra Yukti. Coming to Yoga Tantra Yukti, Padanam, actually he is telling that the words that which is Yastanam Padanam Egikaranam. Yastanam Padanam Egikaranam is the definition given by Chakravarti. But if you see the yoga,
Yojayati iti yoga or yujyate iti yoga. 1 minute, 1 second. Yes, okay. Sorry, the power has gone. That is the reason. So, yujyate or yojayati iti yoga. If you take that nirukti of yoga shabda, you can understand that it is not only for the Anvaya Krama of a sutra or just what you will say Anvaya. Generally now Tantra Yukti, everybody tells that Yoga Tantra Yukti is considered as writing Anvaya. It is only for the Prakarana, it is only for the sutra when you use Yoga Tantra Yukti. Otherwise, Yoga Tantra Yukti is actually, Yukti is the terminology can be given for the Tantra Yukti, Yoga Tantra Yukti. Yukti means your logical application. It can be the arrangements of different siddhantas from different parts of the textbook. You can establish in another siddhanta over there. It is also come under Yoga Tantra Yukti. That means connecting the points in different sides can also be brought under the Yoga Tantra Yukti. Another Yoga Tantra Yukti, if you go for Vagbhadacharya, he will tell that when you present a topic for proof, wherever if you start Pradiknya, Krishtanda, all this 5 Panjavaya Vakya, the presentation style also can be put under Yoga Tantra Yukti. So it is not simply Vesthanam Padanam. You should take your Padanam as Padarthanam because there is no existence for a Pada. Padartha only will existing. If you call it as Padartha, it is subject matter. It is not simply the meaning of a single word. So such a way, if you take the meaning, the Yoga Tantra Yukti is a very vast, very big Tantra Yukti has to be there in the mind along with Adhikarana Tantra Yukti when you apply another Tantra Yukti in that particular context. Without that, you cannot come to the final meaning. Hetvartha Tantra Yukti, yad anyatra abhidasya anyatra ubalabhyate. You see, a principle is used in one place, seeing that principle another place. Hetu and Artha, it is very clear, Hetu and Prayojana. That means Karya and Karana Bandha. So that is applicable in different places. You see, just imagine, anyatra abhidasya anyatra ubalabhyate. One place it is told, another place it is coming. You see, Agadavekshana, Adhigadavekshana, Anagadavekshana, all these Tantra Yuktis must be here to take this Tantra Yukti to be applied. So single Tantra Yukti application in one place is not going to be a practical way to understand the depth of the meaning. 2-3 Tantra Yuktis. Then why these 2-3 Tantra Yuktis? Because different levels of thinking, logical ability has to be developed. This is what is you understand when you Tarka Sangraha, if you study, there is a Vyakhyana, Pradipa Vyakhyana. Just to say that Gandhavati Prithvi, they ask nearly 50 questions to prove that. Even water is having Gantha. So 50 questions the Purvapaksha will ask. 50 questions will be answered by the Vyakyanagara. So this is also very important. Hetvartha Tantra Yukti is not an individual Tantra Yukti. Hetuna Arthaha. Hetuna Arthaha. That means from the cause you find out the Karya. From the cause you find out the Karya. From the Karana you are finding out the Karya. Application in different places. Padartha Tantra Yukti. Padasya Padanam. Padayoho Arthaha. Padarthaha is the Nirukti given. Again, here also, if you take the Rasapada in a word, or if you take Virya, simple term, Virya, Laukika Artha Virya is valorous or anything you give. But when you come to the Ayurveda, the Padartha is very large. Virya is very large. It gives a lot of meanings into it. Even Samprapti Vikattan up to that level, you can imagine from the word, when you take the Virya Pada under Padartha Tantra Yukti. So you must go the different levels of that one, because Virya, you know that Virasya Bhavaha Viryam. Virasya Bhava is to destroy the Shatru, enemy. Guna is only protecting his quality and making the surroundings healthy. But Virya is not like that. He kills the enemy and establishes. So that level of meaning from the Nirukti, you have to travel for it. And with the reference to the context, again the higher level of meaning, you have to travel. Next one is Pradesha Tantra Yukti. You go for the Pradesha Tantra Yukti. Yad Bahutvad Artasya Garshena Abhidhiyate. That means a big topic, because in olden days everything has to be heard and learned. Textbook. This is again the thing. So in that places,
Very less only they will tell. From there, you have to imagine a lot. You just imagine an author tells only one small part of a big topic. You have to reach to the vast topic. For that, you may have to travel Hetu Artha Tantra Yukti, no doubt. You may have to travel Ukhya Tantra Yukti, there is no doubt. So, if you wanted to complete the Pradesha Tantra Yukti, you will go through many other Tantra Yuktis which are going to be explained. Would I want to finally say that a single example for a single Tantra Yukti, that type of understanding the Tantra Yukti will not help a new student, the person who is learning Tantra Yukti for the first time, to think in a vast and deeper manner to reach the pinpoint of the subject matter to that particular context. He may get a vast consideration out of it. So the teaching of Tantra Yukti needs such a deeper manner. Next one is Uddesha Tantra Yukti, Uddhritya Dishyate. Here all words you see, Dishyate. This is all textual writing. Dishyate means direct. A teacher direct to Uddhritya, taking the main point. So he is giving that Sanjaya, Sanksheva Abhidanam, briefly telling. So it may be Rasaswadamla, Tavanaditoshna Kashayagaha, Shadadrivyaha. It can be an Uddesha. Whatever we explain maybe. So from that itself, there is Nirdesha going to come. Uddhritya. So here also, if a person gets to edit a textbook, suppose a manuscript is going to be edited, he is getting the Uddesha of the author. Remaining part is not seen there. What he can do, he can travel through other manuscripts of the same available, or the same subject matter explained in other textbooks. He can go through it, and the deleted part or unseen part of this manuscript can be beautifully edited if he knows that the Uddesha is this sentence. Under that, there should be an Nirdesha in that one. So this is editing of the textbook. This Uddesha Tantra Yukti. And where there is Nirdesha Tantra Yukti, certainly he can go back to the Uddesha Tantra Yukti where he cannot read the manuscript. Edition of manuscript, this is very much helpful. The Tantra Yukti application is very much helpful. And the next one is, again, if you are writing a thesis, there also, some sentences should be very brief. That brief is sufficient to explain the whole explanation below that. So the pages will not increase. Uddesha itself will give the idea of Nirdesha. Such Uddeshas can be made in writing the thesis writing. So brief writing, how to write the briefest point from a vast point is taught in this Uddesha Tantra Yukti and Nirdesha Tantra Yukti. Vakyashesha Tantra Yukti is very clear. Once again, there are so many words missing in Sutra. All these words has to be understood by the learner through his intelligence, through his subject knowledge, through the Adhikarana, through the Shastra, through the Adhyaya. He has to travel all this through the Hetuartha. He has to travel and he has to find out. That is Vakyashesha Yukti. It is not simply adding the verb and completing the sentence. Now the Tantra Yukti, if you ask the student, they will that, yeah, I am completing the Bhavati or Cha, Samuchayavada Cha or Bhavati, and he is completing the Anvaya, Vakyashesha Tantra Yukti. No, not at all. Vakyashesha Tantra Yukti can even include Karma Pada from the Prakarana he has to take from other Sutra and explain. Sometimes the Kartri Pada will not be there in that Sutra. He has to take from the context with the support of the Yoga Tantra Yukti to complete the Vakya. Vakyashesha is the Tantra Yukti is very much needed to complete a Sutra in its perfect knowledge, to get all the words included in that one with the support of Yoga Tantra Yukti and Adhikarana Tantra Yukti and many Tantra Yuktis which has to be applied over there. Next one is Prayojana Tantra Yukti. This is again Prakarshena Yojayate iti Yad Artham Kamayamanaha Pravartade. Whatever be the Shastra works. So you see, it's a thread actually. If you take a drama, the Sutradhara will keep a theme for this drama. Whatever be the additional stories he is writing, it should not go away from the thread. See, if you are doing a manuscript from the first to the last, once you read that manuscript, you know that the author's style is this. This is the way he is going. This is finally he wanted to get it. So if you know the thread into it, flowering, whichever be the missed flower, adding that one is very easy. So this is what is actually the purpose of Prayojana Tantra Yukti. Really, if you write something or edit something, Prayojana Tantra Yukti. Upadesha Tantra Yukti, everybody know that.
Upa samibe stitva dishyate. You see a teacher who stay nearby and doing it and showing it without Chakravani gives that apta vajanam, the word spoken by the great scholars. Since it is very simple, the words spoken by the great scholars can be taken as Ubadishya. That means a person who is nearby sitting and doing. You just imagine in the modern research, if you try to prove something, is it possible today in the previous seminar, Visha Shuddhiyarna, you told very clearly, in lab you are doing and with the Ayurvedic people you are doing. Ayurvedic people, the guru is sitting nearby the Shishya and he is telling that this and this process, I am giving to this patient, this problem is not there. Finish. He does not have to ask which chemical here, how much you cleared, what chemical has gone from here, what step has been taken. No need, because that Upadesha itself is the powerful proof for that. This is one of the defects that which our science, many places, unable to give the proper interpretation for many things, because for us, Upadesha is one of the main Tantra Yukti, one of the main Pramana also, Aptavajanam. Coming to Apadesha. Apadesha is Yada Pradiknyada Sadhanaya Hetuhu Vajanam. See, a topic is being explained in gradually it is going on. Suddenly, the author feels that this may not be clear for my student. So let me explain the Hetu here itself. So this is actually Apadesha, because when he goes on, he has to give a place where the Hetu has to be given. But he is giving in a Apa. Apa means in a different place, which is not the real place. Shabda, Abashabda, Pada, like this. Apa is always not at the right place. That means it needed and he is giving. Like this, we may have to present in our thesis. We may have to understand the textbook in this way. So different meanings can be achieved by this Apadesha. Atidesha. Yad kinchideva prakashi artham anukta artha sadhanaya evam anyadabi pratyadavyam iti paribhashyate. You see, this is the word terminology, paribhashyate. The author himself will give a single part. That means he has enlisted 5 drugs for a treatment. That is example. Here no time, that's why I'm not giving it. 5 drugs he will tell. And he will that like this, these drugs also can be used. He will not give it in the main thing. Again, if you go for the kalpana, swalpa kalpana, swalpena kalpana. So you can give less things and you can give more things. So where there is swalpa is to be told, swalpa only will be told. There all the other will go for this Atidesha Tantra Yukti. He will give little paribhasha into it. Arthabati, Artha Abati, Artham Apadyade. You don't have to put any brain effort. Just by reading a word, you will get, here, yes, there is another meaning. This is Arthavati. But if it is Uhyam, there is a meaning. But you have to go for Tarkena. You have to do the logical interpretations in your brain with the Karya Karana Bandha, and you have to find out the other word. Then it is Uhya. You say one step more in Uhya, but in Arthavati, you don't have to think at all. One sentence is told, immediately next sense of that sentence will be read immediately. This is the difference between Uhya. Otherwise, both are almost same. Next one is Nirnaya Tantra Yukti. Vijaridasya Arthasya Avasthavanam. If you see this one, actually Parigraha in the last Nigrahasthana, there he will tell conclusion. This is there in the Yoga Tantra Yukti also. If you take Nirnaya is the last part where the conclusion would have been told by the author. This is next one is Prasanga Tantra Yukti. You go for Prasanga, Prakarshena Sajjate iti Prasanga. Actually, the biggest issue in olden days is Punaryukti. You should not repeat anything in sense or in word or in sentence or anything of that part which is already told. Matra labam putra labam manyante vayyagaranahi. That is the saying. If you say a single matra, it is considered as I got a son, because that many word I don't have to take from my brain. It is already the subject matter is there in my brain. Such a way, Prasanga Tantra Yukti. This is actually to eliminate the Punaryukti dosha wherever the repetition can be done. This is a relaxation for the author when he constructs a textbook. Many places the same idea has to be expressed in different way according to the context for the easy understanding of the learner. So it should be called as Punaryukti dosha. Just to save from that, you will tell that it is very much needed here. That's why it is explained second time. Next comes Ekanta and Anekanta. It's very clear once again.
Ekanta and Anekanta. Now in the seminars, anything you take, the same object will be seen by different people in different way. And the same object will be seen by different people in the same way. If it is the same way, it is Ekanta. If it is in multiple way, it is an Anekanta. So is Anekanta wrong? Is Ekanta only right? No, it is not like that. When you are having Anekanta, you are supposed to verify all the opinions and come to a conclusion out of it by your logical interpretation with the application of different Tantra Yuktis already enlisted under this. So these all attempts were done by the second editor of Charaka Samhita, and he has added all this part. That's why every place he does not wanted to damage the textbook. So he added a Prasanga Tantra Yukti. Otherwise it will be Punarukti Dosha. So he added that. So very wisely he took the Tantra Yuktis and added the textbook more clear and perfect for the learner. Next one is Ekanta and Anekanta will go like this. There is only one end. Everybody see it. That is a common principle. There they don't have to use the Shabda Praya. When the Praya Shabda is used, generally there is objection. There is a meaning. So that wordings will not be there. Plain sentences will be told. Next one is Apavarga Tantra Yukti. This is very, very beautiful Tantra Yukti. That means suppose a total rule is made. This class should not be taken this, and one group will be exempted from that. Wherever exemption comes, that is Apavarga Tantra Yukti. So we must be very, very careful. The author himself would have been given the Apavarga. Sometimes the author would not have been given the Apavarga, but he would have been given a word to make you think on it. So you can go for Uha Tantra Yukti and you can go for the Hetvartha Tantra Yukti. You will apply both this and you will find out that, oh, even though the author is told these things has to be exempted from this place, automatically you will find out. Here also, your application should not be with one Tantra Yukti. It's a combination of Tantra Yuktis. Otherwise, you cannot reach to the final juicy meaning of that particular context and the vast sense of that context. Next one is Viparyaya. Again, these all are little difference. Apakrishtat Pratipa Eva, which has to be omitted. That means Apakrishta is there, that which is separated from that. Something is Pratipa, omitted. That will be shown by the author himself. Next one is Purva Paksha. Purva Paksha is Pradiknyada Artha Santushakam. No doubt. Every Purva Paksha, generally we will feel that the Purva Paksha is sitting opposite to us. Never. The author himself will think that this possible question can be asked over there. Why he is asking such a question over there and giving the answer over there? It is very much needed for the learner to apply his logic more in diverse manner. Otherwise, the meaning cannot be derived from it with the support of other tantras. So that is the purpose of Purva Paksha presentation by the author himself. Artha Santushakam Vakyam. And it is for the thesis writing, if you take, you must be very careful when you are writing the sentence. Your sentence should not go against your hypothesis in that one. If at all you are going for, it should be for the construction of the textbook. It should never be against the pradiknya that which you have presented. That means hypothesis you have presented over there. This is again, if you go for Vadamarga, there also you can see this. Next one is Vidhanam. Clear, very clear. Vidhanam is generally Sutragaraha Vidhaya Varnayati. This is like this. Now the sir told me just before. The Sutrasthana, among all Sutrasthana, Charaka Sutrasthana is special because he divided that into Chatushka and he added the Yavagus in between. You just imagine the presentation of the textbook with the aim that my textbook is for the treatment. So I gave more importance to the Aushadha Varga first, and in that one I have added all these things. See, this is actually the classical presentation of the textbook. Vidhana Tantra Visheshena Dadhati iti. Dadhati is derived from Dadhati is derived from Dharana Poshanayo. It should hold the theme at the same time. It should nourish the subject matter that which is explained in the textbook from the beginning to the end. That means from the beginning to the prayojana. This is very, very important.
That is why this Tantra Yukti, Vidhana Tantra Yukti is very important. And if you take clinically, if you go for Artha Shreya, he will tell that this has to be done first, then he will be silent. Which has to be done second, which has to be done third one, which is the treatment for fourth one. The other would not have mentioned. But the Vaidya, with the logic, from this I should go for this treatment, and from this I should go for that treatment, then only I will get the result. So Visheshena Dadhati iti Vidhanam. Karmani Luttu Pratyaya. So that's a process of arranging the subject one after another. It holds the main theme of the book, as well as it nourishes, it gives more sense to the textbook to reach its prayojana. That is Vidhana Tantra Yukti. This generally Vagbada translated to explain. That means Arunadatta explains this as Prakarana Anupurvya Artha Abhidanam. From this chapter, why Dinacharya is told first, and then Ruducharya is told. After Ruducharya, why Roga, that means the Anutpadaniyam chapter is being told. There is a logic behind it. So that is Vidhana. That is very important. Same way Chadushka, that which is Charagacharya has been written. Next one is Anumata Tantra Yukti. This is also another classical thing that which Ayurvedic people accepts. Anumata. Yegiya Madasya Anivaranena Anumananam. Anumananam. Anu means paschat. Mananam means accepting. That's all. That is what is Anivaranena, without objecting. Just recalling so many opinions told on the same thing. Next one is Vyakhyanam. This is also very important. Khyapyate iti Vyakhyanam. Visheshena asamantat khyapyate iti Vyakhyanam. The example they are giving is the child that which comes first and it grows. That is being very less explained by the author, but it has to be needed a special attention for the scholar to give more thinking over there to get each day development, each hour development, each month development to reach it. So there the other learner has to understand that, oh, this is Vyakhyana Tantra Yukti applied by him. That means I need to support some additional explanation over here to get from the beginning to the end. The author himself will tell a small caption over there. You think more in this context, we will tell such sentences. Next one is Samshaya Tantra Yukti. This Samshaya Tantra Yukti and Vikalpa Tantra Yukti, both are used by Charaga, but Vagbada you cannot see both. Actually, Samshaya Tantra Yukti also there will be Va, this or that. In Vikalpa Tantra Yukti also, this or that. Then how to differentiate Samshaya Tantra Yukti and Vikalpa Tantra Yukti? You know that Visheshena Kalpyate iti Vikalpaha, or Vividhehi Kalpyate iti Vikalpaha. There is Kalpana. Kalpana means it is a final statement with Va is told, then it is Vikalpa Tantra. It is a final statement. This or that. That means this or that. It is a final statement for that. But Samshaya is not like that. Samshaya means, again, your application is very much needed to prove. Why this I have to give? As if you go for Vijarya, Uhya, Dhyeya, like this, 5 Vishayas of the mind. Uhyam, Chindyam, Vijaryam, Chindyam, Vijaryam, Uhyam, Dhyeyam, Sankalpyam. Last Sankalpyam. So when you come to Kalpya, Vikalpya, there the doubt is not there. 2 treatments are given, you can take. But when Samshaya is there, whether I have to give this or that, then your logical thinking is more needed where there is the Samshaya Tantra Yukti comes. So every place why is there, don't confuse it as Samshaya Tantra Yukti. That is what is Dridhavala says. But Vagbada, if you take only Samshaya Tantra Yukti, Vikalpa will not be there in that one. He uses everywhere as Samshaya Tantra Yukti. Next comes, actually, Charaga's explanation is Dridhavalas. I will call it as Dridhavalas. Tantra Yukti is more better because you can differentiate Samshaya and Vikalpa in a beautiful manner. If you are deep in subject, very easily you can catch it because this is confirmed by the author. Only thing is which one I have to choose. That's all. Next one is Adhitavekshana, Anagatavekshana.
That is also sir told just before. If you wanted to know something in Charaka Samhita, you should start from the first chapter of Charaka Samhita to the last part of Charaka Samhita, then only you can understand, because it is connectivity. So sometimes the previously told will be helping you to explain the after told. And sometimes the previous one can be established with the support of the things that which is going to come. So these two are very much needed. So if anybody say after just by reading Sutrasthana, this is the meaning of this sloka, more than meaning is not there, then it is, he does not know Tantra Yukti. Because if he travel with that sutra to any other sthana, he may be have to given some additional sense to it. So complete reading of the Samhita is a necessary to understand the Samhita perfectly. Anybody he reads only a part of Samhita can never be master the Samhita. That you can find out from Adida Vekshana and Anagada Vekshana, how important that is. Don't read a half part. Even if the PG scholars will read one part of the journal published and they will take it as a support for their topic. Actually, it is wrong, because in that small part, they cannot understand what really that author meant by that small paragraph and that conclusion in that paragraph. It will be related to his main prayojana. It cannot be taken for another prayojana. Generally, the students will take such things in PG for reference, how many journals they have read and etc. Such things they will do. Partial reading is always misguiding of understanding the Samhita, that you can find out Anagada Vekshana, Nadida Vekshana. Swasapnya, this is what is I told you. Swasapnya and Padartha. Swasapnya and Padartha are very much related to each other. Padartha is nothing but Swasapnya only. The example, if suppose you are taking same Virya or Shaka. Shaka is the terminology you have taken. Shaka is common meaning outside is something different. When you come to Ayurveda, the meaning is different. Then why they use Shaka word over there? Charaka is very clear about it, because whatever be the word you are using, it should be commonly understood by even an illiterate person in the village. Your terminology should be very much close to the words which are suitable for even a person who does not have much education. You don't use very hard words over there in your scholarship. So that is the reason simple words are taken. But when it comes to Ayurveda, the meaning will be changing. So Adhikarana Artha, contextual meaning is very important once again. For that, you have to deeply go through the Yoga Tantra Yukti, Adhikarana Tantra Yukti, Hetwara Tantra Yukti, whatever you have to apply over there, all the Tantra Yuktis you must, option by option, you have to apply over there, and which is more suitable into that context, you have to choose it. That is what is this instruction. Swasapnya and Padartha gives to you. Uhyam I told you. Uhya and Arthavati generally you can find out. Tandre Anibaddham Praknyaya Tarkyatvena Vadeshyate. Tandre Anibaddham. In Tantra it is not told, but what you are doing, Tarkyatvena, you are logically thinking and finding out it, but you have to think a lot. But in Arthavati you don't have to. You don't take dadi in the night, automatically the day it can be taken. Even a normal person can understand. He does not have to think too much, deliberate too much on it. So such a way of presentation is a difference between Uhya Tantra Yukti and the Arthavati Tantra Yukti. Samuchaya Tantra Yukti, once again, you will list some 10 numbers. You can put a cha at the end. That is one type of the Samuchaya. But if you take the Nidana Sthana and etc., you can find out the first part of the sloka, sutra, will give the main cause of the disease. And they will give a second option and at the end, cha. Just like you go to the market, bring the cow also. You go to the market, bring the cow also. And also cha word is used. Even api can be used as samuchaya. When you use it, your main duty is going to the market only, not bringing the cow. Same way, in Nidana, if you say such an Anvaya, you can find out this is the main course and this is only the secondary course. In Prameha Nidana and in some other Nidana, there are so many places. You can find out this example. Time is not there, that's why. Just examples I left. But such a way, if you write the Anvaya of the sloka, the meaning of the sloka will be entirely different. Main cause, secondary cause. Not that much important. This can. So why this is told in with the Samuchaya Tantra Yukti? You can think over it.
what is the problem if I take this, why this can go, but there will be so many other Upapatti Karanas or any other reasons. You can just think over it. Suppose if you are finding out the disease with the secondary cause, your treatment modality will be changing. If it is the main cause, your treatment modality will be changing. This is all very important to understand the slokas. Next one is Nidarshanam. Again, Nidarshanam is nothing but Drishtanta, which is there automatically in Yoga Tantra Yukti. Because when you prove something, you have to connect each one. So there Drishtanta is told, but still Nidarshana Tantra Yukti. And then next one is the beautiful one, Nirvajana Tantra Yukti. What is the difference between Nidarshana Tantra Yukti and Nirvajana Tantra Yukti? Nirvajana Tantra Yukti, Pandita Buddhigamyo Drishtanta. You see, it is also Drishtanta only, but Pandita Buddhigamyo Nisheshena Uchyate Anena Vakyena Vishaya Nirvachanam. Definition. It is very clear. More than that, no upper nor down. So it can be understood only by a scholarly person. But many places you may have to compromise yourself for the person who does not have that much intellect. That is Nidarshana Tantra. You take an example. There are all places you can take such a way. So this is two different presentation. Actually, both are going to give you the perfect interpretation of the things over there. There's no doubt in that one. If it is a law, law. If it is Siddhanta, Siddhanta only. But one you are giving only just the example, so normal person can easily catch out. The other one is needed scholarly. So why then these two? Why then these two means the second one can never be interpreted with one example. It can be explained only as it is. So any Nirvajana in our textbook, we should never compromise there. We should take the perfect sense of that sentence. Next one is Niyoga Tantra Yukti. Niyoga Tantra Yukti, when you go for that one, Nisheshena Yochayati Niyogaha. You take Niyoga Tantra Yukti in clinical aspects. If Tavya Pratyaya, Aniyar Pratyaya, Eva, Abhyaya are used, it is should meaning. It will give should meaning. It is Niyoga, no other option. That is what is Avashyam Anušteyataya Vidhanam. It should be. Avashya Anuštanam. Should be. But if it is in Vidhiling, there are two options for it. One is should, another one is may. Generally, all the instructions in Ayurveda, they will use mostly Vidhiling because they open it for the Vaidya and they go for as it is the Lakshana Shastra. So they will use more Vidhiling. You may get up in the Brahma Muhurta. You may get up in the Brahma Muhurta. It is very clear that more than that, there is no good time to wake up. But they are not ready to tell that you should get up in the Brahma Muhurta. That is why he used the word Uttishtet. But if there is Tavya Pratyaya or Aniyara Pratyaya or Eva, you have no other option. Gantavyam Eva. Should go, that's all. No other question. So such presentations, wherever in the textbook, there you cannot go beyond that. So they're all complete. The knowledge is end. Everything is cleared by that one. More than that, you have nothing to think. But if it is Vidhiling, you can have an option. You can go for little more Hetu Artha or Hetu. You can think or logical thinking. You can go research. You can go Samshaya Tantra Yukti. There is no doubt in that one. You can go for. Even in Vikalpa Tantra Yukti, you can go in the same itself, different kalpanas you can go for. There all the Vedyas options are there. But where there is Niyoga, the sentence is being told in the Samhitas, it will be very difficult for you to, if at all you are going, you will not get result. Certainly there will be damages for that. This is Niyoga Tantra Yukti. Eva, Tavya Pratyaya, Aniyara Pratyaya, etc. Very, very important over there. Next one is Vikalpana. I told you, Vikalpana and Samshaya. Here it is Pakshika Abhidanam. You see, Pakshika means there are so many sandhis like that. Suppose Shat, there is a sutra. If Visarga is coming before Shakara, Visarga may get deleted or Visarga may become Sakara. So what you have to do? If I want to delete, then only my chandas is right. I will delete and I will use it. If I don't have to delete it,
I will put Sagara and I will make first Chutta Sandhi, then I will add the Sagara to Shara. But there are some Santhis, Nitya Santhi, that is Niyoga actually. You cannot change. Wherever you are writing, you must write it. See, Anuswara Santhi is Nitya Santhi. If you write in between a sloka Ma and Halanta, your writing is wrong, your Chandas is wrong. That sloka cannot be taken. Such a way the Niyoga is. Vigalpam is like this. But the conclusion is there. But in Samshaya, the conclusion is not given by the author. It is up to you to make the conclusion. That is Samshaya, difference. Next one is Pratyutsara. This is also just like Anumata Tantra. Anumata, he is agree by telling so many opinions. Here you see Pratyutsara. What he will do? Upapatya Paramata Nivarana. Upapatya, just for his needed. Upa means Samipe. As he want another opinion from others, needed for him. Suppose the number of bonds, I think the example they are giving for Pratyutsara. One other told one number, another told another number, another told another number. This is all he will tell. And finally, he will tell his opinion. So you should understand that he does not want to accept the previous three. Then why he would have told the next question has to come in our mind. Why he would have been told, then you have to go for the other Tantra in which that is been written. Then you have to find out what was the prayojana of that Tantra, how the textbook Vidhana is being made. Then accepting that how much useful in that Tantra. So it is fit only for that. For this person's Vidhana, this is not suitable. For this person's Chikitsa, it is not suitable. So you can mix Vagbhada's principle and Charaka's principle, but only after verifying this many aspects, you can change the mode of treatment from Charaka to Vagbhada or Varabha to Chakbhada, because the textbook arrangement also decides the way of the application of the theories in that textbook and understanding the application level in that textbooks. It is very, very important, has to be. Next one is Uddhara. Very clear. Here he is. Uddharo nama Parapaksha Dushanam. That's all. You are wrong. Very perfectly he will tell. But in Pratyutsara, he will not tell. He will present one other, finally his opinion. But in Uddhara, he will tell that, no, Paradushanam only. Your opinion is wrong. So that is that. And the last one, Sambodhantra Yukti, everybody accept. This Sambhava is there in Arthashraya also. This Sambhava is very simple. What is there? That it is. Yad Asmin Ubhavadyade. For nobody can oppose it. Nobody can oppose the Sambhava Tantra Yukti, because it is very clearly of that from this, that only will make. So such conclusions are there. They are all, we do not have to go for too much of observations or too much of research topics or too much of arguments on it. There is no sense in that one because it is the final one. So in a flow, within the short time, 40 minutes, I have taken all the Tantra Yuktis, just minimum I told. My humble request to everybody is, when you understand Tantra Yukti, when you teach Tantra Yukti, please don't teach Tantra Yukti with the examples. With the examples we teach, it will be only for that example the children can understand. They cannot understand perfectly what really the Tantra Yukti meant for. Each Tantra Yukti is very vaster in its swabhava. If you teach a textbook and the application of Tantra Yukti you put in each point, you can find out the same sloka in the same sutra, you may be able to put nearly 3 to 4 Tantra Yuktis, and you should understand to that context which Tantra Yukti can be taken. Suppose if you wanted to contradict that point and you wanted to go for the research level, you wanted to find out some new aspects, then you can go for the other Tantra Yukti applied over then the level of meaning you have reached. Such a way, if you think the Tantra Yukti learning will be most useful for clinics as well as for understanding the textbook. This is a brief one. Each Tantra Yukti can be taught for 1 hour with a lot of examples from the textbook. More than that, I will tell, don't teach Tantra Yukti as individually. You take a chapter, each places you explain the Tantra Yukti in point of the textual understanding as well as on the view of clinical approach.
Vidhana is all are very, the Yoga Tantra Yukti is very clear. We have done a thesis here, we have gone through, we found that there are so many instructions in our textbook, Charaka Samhita, Tabhya Pratyaya is used, not Vidhiling. This must be done. And we have just gone through the supporting theories. We found that it should be, there is no other option for you. There is only option. Such a way you can find out. But with healing, you don't have to conclude like that. You have an option that you can think, but you need to cover so many other areas over there. I think the time is 9:50. The given time is only 30 minutes. I have taken 40 minutes. Pavan Kumar sir. Pavan Kumar sir. Excellent, excellent, Ramadas ji. You have explained Tantra Yukti in Yadbhavada detail. dattam tat karma maya kridam api. Yadbhavada dattam tat karma maya kridam. Samkshepena kridam. Samyo nasti. Tasmat. Great, Maybe great, great. Bhanupriya madam or any such scholars can give me some guidance to improve whatever I have to. I will be happy to receive it. We are learning from you. Not like that, God bless sir. you. Not God at all. bless you. God I bless have you. to learn from all. You can suggest. Now for thank you, thank you, thank you. Agnihotri sir. Thank you, Dr. Pawan Sharma ji. Thank you, Professor Ramadas ji. We were just listening the fourth son of Charak Maharshi in the continuation of our Charak Jayanti fortnight program of this year, 2022. As he told in between that there will not be of any use if you don't go through the whole of Sanhita, means Charak Sanhita part 1 and part 2. Instantly, I was just having a smiling face. Instantly, I got a thought in my mind, you will be completely incomplete if you will not listen all the 51 guest speakers of this year's Charak Jayanti Pakshik program. So you are the fourth one. Our second pleasure and happiness is Fifth, this. sir, fifth. 51. Fifth plus नहीं 2 और 5 7 5 कल हुए 2 आज हो गए 7 बनवारी लाल गौड़ जी तपत जी right. 7th. Thanks for your correction. 2 हमारे शिरोमणि थे, उनको तो शिरोमणि के सिर पर शीर्षस्थ है, उनको तो हमारी क्या वो है पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा, तो वो शीर्षस्थ को क्या करें, हम तो कनिष्ठिकाधिष्ठित की चर्चा कर सकते हैं इनके सामने. तो the second pleasure point was this, that how wonderful it is that as I remember, he belonged to Kerala. Mother tongue is Malayalam. Malayalam person got the proficiency in Sanskrit, understanding the whole concept of Charak Sanhita and delivering his lecture on English. What a great combination. Where should I? Devanagari Lipi. And Devanagari Lipi, the presentation, the PPT is on Devanagari Lipi. So our confusion is he told that Sanshay, then under the total discussion of this Tantra Yukti, there was a great Sanshay of which language I should consider you, whether of Malayalam, English, Sanskrit. An important factor is this, that you understood the total concept of Charak Sanhita in your mother tongue, then use your knowledge and proficiency of Sanskrit language, and then made it easy for all those who are non-Malayalam speaking persons. This is a great contribution, and you also underline thrice regarding the Anir Pratyay and Tabbat Pratyay. Really, I was a student of Vyakarnachar for Vyakarana with the help of the Sanskrit Jnanada book, and also a student of Sahityachar for Chandapeeth Katha, Raghuvansham and Avagyan Shakuntalam. But the standard was only intermediate, as we were asked to go for the one subject Sanskrit under the ordinance 17, chapter 3 and 12. So the way you touch the whole of the theme, it is not only useful for the reading Charak Sanhita,
it is also for Tarak Sanghita, it is also for all the epics which are in Sanskrit or in any language. At the same time, the total direction for the making a dissertation to the students of MD and PhD scholars, standing in front of mic for the presenters of the BMS, MD scholars, and this is what your the masterly and over proficiency approach on your subject, language, understanding, and that too for the cause of Ayurveda. So thank you very much, thank you so much. हिंदी में बोलेंगे, आप समझेंगे जरूर, लेकिन आपकी इस पूरी विद्वता का हम बहुत ही अच्छे शब्दों में सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और हम ये विश्वास कर रहे हैं हमारे आज के जितने भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग थे वो अंतःस्थल की गहराई तक लाभान्वित हुए हैं और मानसिक रूप से आपको हमेशा याद करते रहेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रोफेसर रामदास जी. ओवर टू डॉक्टर पवन शर्मा जी. म्यूट है आप. आज हमारे साथ सर आदरणीय पांडे जी जुड़े हुए हैं. पांडे जी जुड़े हुए जी. वैद्य प्रेम शंकर पांडे जी, प्रणाम. प्रणाम सर. प्रणाम. कैसे हैं सर? सब बढ़िया है, ठीक है. बस आप भी जुड़ते रहा कीजिए मैंने समृद्धि से. तो चरक पर चर्चा हो और मुझे मालूम पड़ जाए मैं न जुड़ूं संभव नहीं है. नहीं, मैं तो आग्रह करूंगा कि आप अपना फोन नंबर यदि चैट बॉक्स में डाल दें तो मैं आपसे सूचना मतलब कल संपर्क कर लूंगा और फिर मैं आपको भी सुनना चाहता हूँ चरक पे. जय हो, जय हो. ठीक है. आप हैं, राकेश कुमार तिवारी जी हैं, ये जो चरक को प्यार करते हैं, चरक को आस्था रखते हैं, उनसे मैं जरूर सुनना चाहूंगा सर. हम लोगों का खुश नसीब होगा ये. कल हम इस कड़ी में डे 3 पर 2 एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं. दोनों यंग जनरेशन के हैं. डॉक्टर मीना टांडले फ्रॉम मथुरा संस्कृति यूनिवर्सिटी. टॉपिक विल बी फ्यूचर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज रिविजिटिंग चरक संहिता. एंड सेकेंड स्पीकर विल बी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन, इम्पोर्टेंस ऑफ अष्टाहार विधि विशेषायतन, Ujjain, from Ujjain. So please join tomorrow also, because this Anvarat Yagya will be continued for 15 days. जी सर, पांडे सर कुछ बोल रहे हैं. आदरणीय राकेश कुमार तिवारी जी कुछ बोलेंगे चरक संहिता पर. प्रोफेसर राकेश कुमार तिवारी जी, पांडे जी, जो भी आप बोलना चाहें. जी पांडे जी. सर मैं बिल्कुल मैं राकेश तिवारी हूँ सर. हाँ जी, हाँ जी सर. बिल्कुल एक ही बात है सर, रामदास सर को सुन करके और शर्मा सर को सुन के बहुत अच्छा लगा. मैं कल किसी वजह से जुड़ नहीं पाया, और ऐसी ये सीरीज आपने कंसेप्चुअलाइज की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर. कि इतनी चीजें जो चरक पर इतनी परिचर्चा होना बहुत ही आवश्यकता है, और ऐसे समय पे आपने किया है सर. इसके लिए बहुत बधाई की पात्र हैं आप सर. एक ही बात कह सकता हूँ, रामदास सर के लेक्चर में भी मैं थोड़ा सा देर से जुड़ पाया, मैं थोड़ा सा दैनिक में लग गया था. तो वो ही कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति तत्क्वचित्, केवल चरक के बारे में यही कहा जा सकता है सर, कि इसमें कोई शक नहीं कि उसको आद्योपांत जब तक नहीं पढ़ा जाएगा और बारंबार नहीं पढ़ा जाएगा तब तक कुछ ऐसा नहीं कि उसका कोई अंत नहीं है. थैंक यू सर. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कार्य सर. अग्निहोत्री सर. पांडे जी कुछ कहेंगे? हाँ, पांडे सर. आज का जो व्याख्यान मैंने सुना, इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा कि अब मैं क्या बताऊं. चरक के बारे में तो क्या कहें. एक सूत्र में चरक ने अपने चरक क्या तो
आचार्य दृढ़वल का है, लेकिन उसको हम चरक का ही मान के चल रहे हैं। एक सूत्र में जो बात कह दिया उन्होंने, तस्मात् सत्यप निर्देशे कुर्यादूह स्वयं धिया, तस्मात् सत्यप निर्देशे कुर्यादूह स्वयं धिया, अब बिना तर्केण या सिद्धि दीक्षा सिद्धि रेवसा। सब कुछ लिखा है, लेकिन ये उनकी उदारता है, यही उनकी महत्ता है इस ग्रंथ की, कि कहते हैं कि सब कुछ लिख दिया मैंने, लेकिन चिकित्सक को चाहिए कि वो अपने बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करके कहाँ क्या करना है वो अपने विवेक से करे। अगर किताब में लिखा है उसके अनुसार प्रयोग करता है तो ये दीक्षा सिद्धि होती है, तुक्का होता है। तो ये चरक की महत्ता है, और इसको जब तक हम आद्योपांत ना पढ़े, सूत्र स्थान से लेकर और सिद्धि स्थान तक पूरा नहीं पढ़ेंगे, तो वास्तव में हम चरक को नहीं समझ पाएंगे। बस इतना ही कहना है। मैं आप दोनों से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप भी हैं, राकेश तिवारी जी भी हैं, काइंडली अपने व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में दे दीजिए, तो मैं आपसे संपर्क करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि संयोग बस, हमारे सौभाग्यवश आप लोग दो विद्वान जुड़े हुए हैं। आप दोनों को मैं परसों के लिए आमंत्रित करता हूँ, परसों चरक पर व्याख्यान के लिए आदरणीय प्रेम जी पांडे और राकेश जी तिवारी दोनों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया मेरा हमारा आमंत्रण स्वीकार कीजिए। परसों का थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ी समस्या है। परसों के बाद आप डेट बोल दीजिए। बाद में हम देख लेंगे। परसों में एक जगह जाना है, और मैं जुड़ूंगा भी तो रास्ते में रहूंगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है उसको करने में, लेकिन जरूर जुड़ूंगा मैं, किसी जल्दी ही मैं बताऊंगा आपको। जी जी, मैं नंबर डाल दे रहा हूँ। विष्णुप्रिया जी कुछ बोलेंगे चरक संहिता पर? मैं विष्णुप्रिया जी से भी आग्रह करता हूँ कि मैं असित पांजा जी से भी बात किया था। असित पांजा जी अभी 6 तारीख तक व्यस्त हैं। विष्णुप्रिया जी अपने समय से दें, वो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ संहिता एंड सिद्धांत हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी एक कोई डेट दें, जिससे हम लोग, मतलब 51 शक्तिपीठ में से एक शक्ति तो हमारी विष्णुप्रिया जी भी है, तो माँ शक्ति है हमारी वो। तिवारी जी अच्छा, आप ज्ञान है उनको जी। सर मैं थोड़ा सा समय इस बीच एक हफ्ते तक कुछ प्रॉब्लम है अभी सर कहीं, तो मैं कुछ समय बाद जरूर आपसे कनेक्ट होऊंगा, और मेरा नंबर तो है आपके पास, मैं डेली कनेक्ट होता हूँ, आपकी सारी सूचनाएं मुझे मिलती हैं। और थैंक यू सर, मैं बिल्कुल अवश्य ही द्रविड़ विषय जो आपकी पसंद का टॉपिक हो उस पर प्रयास करूंगा सर। जरूर जरूर सर। ठीक सर, बहुत अच्छा सर। और किसी को कुछ? पटनकर साहब, वैद्य पटनकर साहब फ्रॉम मुंबई। हाँ सर, वो तो बहुत अच्छे सर। अरे नहीं अच्छी बात नहीं, तो इसीलिए मेरा मानना ऐसा है कि चरक एक बार नहीं, उसका पारायण होना चाहिए। तो पारायण करके ही चरक हम लोग समझ सकते हैं। इतने सब महानुभव जो है उनको सुन रहा हूँ कल से, तो मतलब एकदम संतुष्ट अभी होना शुरू हो गया है। तो जैसा आपने कहा कि 51वीं कड़ी तक, मतलब 51 स्पीकर सुनने के बाद ही थोड़ा कुछ चरक हमारे जैसे लोग समझ पाएंगे। और आज के दोनों भी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे थे, और ऐसे ही तरीके से अगर आजकल के बच्चों को सिखाया जाए तो चरक के बारे में जो रुचि है वो और भी बढ़ सकती है। थैंक यू रामदास जी और हमारा कभी कभी व्हाट्सएप के ऊपर चर्चा होती है, पर फिर भी बहुत ही अच्छा एकदम प्रेजेंटेशन, एक्सेलेंट एज यूजुअल। चलो थैंक यू सर। डॉक्टर JRP अरोरा जी आज नए जुने हैं। डॉक्टर JRP अरोरा।
जो भी कुछ अपने सुझाव देना चाहे। मेरे मन में तो पारायण शब्द सुन के एक आया कि अगली चरक जयंती को एक, यदि मैं कहीं कॉलेज से कुछ अटैच हुआ कभी, तो मैं अखंड चरक पारायण करें। जैसे अखंड रामायण होती है, ऐसे अखंड चरक पारायण होगा, बाकायदा ऑर्केस्ट्रा के साथ होगा। अब उसमें 2 दिन लगेंगे कि 3 दिन नहीं जानता, क्योंकि वो 24 घंटे में तो नहीं हो पाएगा। तो 2 दिन 3 दिन जो भी लगेंगे, बोल रहा था ना मैं, हमारी नेक्स्ट जेन की शक्ति उसको पूरा करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही अच्छा सुझाव है, जरूर सोचेंगे उसके ऊपर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत ही एक्सेलेंट। और सर वाल्मीकि की हेलो सर, मैं कह रहा एक एक स्थान को यदि एक एक दिन ले लेंगे तो भी 5-7 दिन में हो जाएगा, अखंड न भी हो पाए जैसे, तो वो भी एक क्रम हो सकता है। क्योंकि संस्कृत में पढ़ना होगा तो संस्कृत के सभी विद्वान थोड़ा मुश्किल हुआ था, एक एक स्थान पे स्थापित कर लेंगे तो सूत स्थान से लेके और हम आखिर तक पहुंचते हैं सिद्धि तक, तो भी बन जाएगी बात। ये भी 1 घंटे के कार्यक्रम में मेरा ख्याल है कि एक अध्याय तो बड़े आराम से पढ़ा जा सकता है। एक अध्याय, एक मास तो पारायण। पढ़ने का काम दीजिए तो मैं पढ़ दूंगा, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, जब कहिए तब पढ़ दूंगा। हमें समझना भी होगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। प्रोफेसर रामदास जी तुरंत उस पर अपनी जो ऐशना टिप्पणी शुरू कर देंगे, फिर बिना उसके वो नहीं श्रवण लाभ फिर प्रसाद ही मिलना चाहिए। श्रवण, वो चाहे संस्कृत में या हिंदी में अर्थ के साथ हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। सर किसी ने प्रयास नहीं किया, जैसे वाल्मीकि रामायण को दोहों चौपाई में ला दिया लोगों ने, ऐसा चरक संहिता को चौपाई और दोहों में लाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। तो रास्ता शिव तांडव स्तोत्र तो बन गया है हिंदी में, चौपाइयों में। नहीं, वो तो हर संस्कृत के श्लोकों का अनुराधा पौडवाल ने हर संस्कृत के श्लोकों का हिंदी में करके दिया। ऐसा कोई विद्वान नहीं अभी तक हुआ कि जिसने चरक संहिता के अच्छे श्लोकों को और हिंदी में चौपाई और दोहों में बदला हो। हिमालयन कार्य। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर प्रोफेसर रामदास जी की भाषा मातृभाषा हिंदी होती तो उनसे इस बात पे संस्तुति और स्तुति की जा सकती है, कुछ कार्य को शुरुआत करें। नहीं, मैं रामदास जी के साथ में आदरणीय मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी को लगा दूंगा। वो संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे सर जी। ही वाज प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एंड देन रिटायर्ड विद वाइस चांसलर ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी उज्जैन। जी जी। तो वो हिंदी के हैं, आप संस्कृत के हैं, आप दोनों मिलके दोहा चौपाई में लिखिए रामायण, गा के हम लोग गाया करें, चरक को भी गाएं, दोहे में, सोरठे में, छंद में, चौपाई में, ऐसा मजा आ जाए सर। थोड़ा प्रोफेसर राम तीरथ जी भी अपना सहयोग देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे, बिल्कुल, वो उसकी और मात्रा पर बिठाएंगे तो गाने लायक हो जाएगा। हाँ थैंक यू सर, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आज का चरक का जयंती महोत्सव का दूसरा दिन आप लोगों के सानिध्य में बिल्कुल ऐसा गुजरा कि पूछिए मत। ऐसा लगा कि सामने हमारे चरक बैठे हैं और हम वो स्टूडेंट हैं जो BAMS फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए हैं और अभी सीखना बाकी है। जितनी रोज वेबिनार कर रहा हूँ उतना लगता जाता है कि मैं कितना छोटा हूँ, अभी बहुत सीखना बाकी है। और यंग एज में जब लोग सिखाते हैं तो यूं लगता है कि वाह, मेरा आयुर्वेद बढ़ रहा है, हमारा आयुर्वेद बढ़ रहा है, और हमेशा बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और कर फिर मिले 8:30 बजे कल। जी साहब, एक औपचारिक आभार प्रदर्शन। हाँ जी, हाँ, आप नंबर आपने डाले हैं। एक औपचारिक आभार प्रदर्शन के तौर पर हम अपने कुछ शब्द देना चाहेंगे। जरूर। कल से शुरुआत हुए हमारे पक्ष में महर्षि चरक जयंती महोत्सव का आज दूसरा दिन संपन्न हुआ, और इस सेकंड डे में हमने जिन 2 अपने अतिथि वक्ताओं से लाभ मिला, उसमें वैद्य छात्र वैद्य कमलेश कुमार शर्मा जी अकिंचन, जिन्होंने शुरुआत की तन्मे मना शुभ संकल्पम मस्तु। जब शुभ संकल्प होगा तो निश्चित रूप से हमारे मन के जो विचार जो मन में आएंगे वो पूर्ण होते जाएंगे। बहुत ही गहराई से उन्होंने चरक संहिता के पूरे
रूप को अलग अलग करके बतलाया कि किसका क्या योगदान रहा। दरबार साहब, कल भी प्रोफेसर बनवारीलाल जी ने चर्चा की, क्योंकि सब दोनों एक ही स्कूल से आते हैं तो विषय वस्तु वही रहेगी कि कैसे मैंने भट्टाचार्य हरचंद ने बात रखी, चक्रपाणी जी का क्या रहा, दड़बल साहब ने क्या बनाया, कितने योग्य और कर्मठ हमारे कार्यकर्ता थे, ज्ञानी थे, या किनके पास समय का अभाव था। उसमें से उन्होंने इंद्र भगवान के लिए कहा कि उन्होंने आगे बढ़ा दिया, लेकिन अश्विनी कुमारों ने अपनी दक्षता दिखलाई। एक ने काय चिकित्सा का पक्ष पकड़ा तो एक ने सर्जरी का धन्वंतरी के हिसाब से चलाया। वैसे आज उन्होंने चर्चा की और विशेष रूप से उन्होंने बल दिया कि आचार्य चरक का ये वैशिष्ट्य है कि उन्होंने चतुष्टय बना के अध्यायों को ग्रुपिंग की है, मतलब एक उन्होंने कोडिंग कर दी कि इसमें हम ये चर्चा करेंगे, इसमें हम स्वास्थ्य चतुष्टय चर्चा करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि अगर बच्चा फ्रेगमेंटेड वे में पढ़ेगा तो एक एक ग्रुप को लेके काफी उसको ज्ञान मिलता जाएगा, पूरा तो अध्ययन दिक्कत आएगी। तो वो जो उन्होंने चतुष्टय बनाए वो सराहनीय है, उनसे हमें सिद्धांत मिलते रहेंगे। और ये भी उन्होंने बताया कि बिना कल्प की सिद्धि के हम कल्प स्थान की सिद्धि हम सूत्र स्थान के निर्देशों के नहीं कर सकते। इसलिए सूत्र कल्प सिद्धि सब एक साथ हमें समझने होंगे। बहुत गहराई से उन्होंने चर्चा की और अपने को बड़ा जो अकिंचन बताते हुए कहा कि हम तो पल्लवग्राही मात्र ज्ञानी हैं, जो संपूर्ण रूप से जो अनुशीलन करते हैं चरक तो उनके लिए है। और वही लगता है जब हमारे गुरु लोग कहते थे हमें अभी चरक समझ में आना शुरू हुआ है या अभी चरक में नई बातें मिलती हैं, तो एक अजब सा लगता था। फिर ये इतने बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं, लेकिन आज समझ में आता है कि ये कोई दावा करे कि उसको चरक आता है या उन्होंने चरक को समझ लिया है, वो मुश्किल है। समर्पण भाव में जो कल हमारे प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, तपन साहब, उन्होंने कहा मैंने तो उसको स्वीकार कर लिया है, हमने हृदय से लगा लिया है, हृदय में बिठा लिया है, वो भाव ज्यादा अच्छा है। समर्पण के भाव में प्राप्ति अच्छी हो जाती है। और उसके बाद आज हमारे द्वितीय अतिथि वक्ता रहे प्रोफेसर रामदास जी, जिन्होंने अपने संस्कृत पांडित्य मतलब द प्रोफिशिएंसी एंड मास्टरहुड ऑफ द लैंग्वेज संस्कृत विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस द grammarian part of the Sanskrit language that made the things very clear in terms of the sankalp, vikalp, sampurna total Tantra Yukti, how the Tantra Yukti should be narrated in its letters and spirit, that has been projected step by step in a very very understandable manner by Professor Ramadas Ji. Our today's apart from our today's guest speakers, those who had been with us in our previous webinar timings, that is 6 to 8:30, continuously continued in our successive webinar. These were Dr. Ashok Kumar Dubey sir, Professor Vishnupriya Das ma'am, Dr. Doma Jagdish ji, Dr. C.P. Sharma sir, Dr. K.D. Lokanangonge, Dr. Ajay Kumar Sharma ji, Dr. Parikshit Devnath ji, Dr. Tejinder Singh, Dr. Kamini Dhiman ma'am, Dr. Pradeep, Dr. Vaidya Parul Joshi, Dr. Rahmanullah Rahmani ji, Vaidya Prem Shankar Pandey ji, Vaidya Rajan Padankar ji, Dr. Ram Gopal Somani ji, Dr. J.R.P. Arora ji, and overall Dr. Pawan Kumar Sharma ji. So these all ornamented the webinar and they made the webinar a great success, and we all wish for the next 13 days to be ornamented by such type of the guest speakers like you people. The status and depth of Charak Sanhita and Maharshi Charak will still remain at top with the you people's learned contribution. So thank you all, thank you so much, and we all congratulate you becoming a Charak Putra, rather I should say, and we will meet again on tomorrow. Thank you so much. And good night. Over to Pawan Sharma ji. अग्निहोत्री जी जी सर ये जी। एक क्षण के लिए कल जो है ना बनवारी लाल जी के और उपरांत में और एक वक्ता थे ना, गेस्ट थे ना, उन्होंने ये बात पूछे कि स्टंट डालने का इस हालत का अगर मिटा दिया जाए आयुर्वेदिक साइड में, कोई ऐसा प्रयत्न करें, तो मुझे तुरंत याद आया, लेकिन मैं टपका नहीं सका बीच में क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे आदरणीय सूरज प्रकाश जी थे ना,
नहीं नहीं, वो बेड पे था, सिक बेड पे था। हाँ, उन्होंने उनको पढ़ा है, थर्सडे को उनको अटैक आया था। उन्होंने उन्हीं को पूछ रहा था, जी, उन्होंने पूछा पूछ रहा था। मैं एक दवा का नाम बता दूंगा, शायद आप लोग सुने या नहीं सुने, मैं नहीं जानता। समग्र गरल महातरुणार्क रस, जिसमें जी, जिसमें जो है ना ब्लैक समग्र कोबरा नहीं होता है, वो एक सरपेंट जो होता है, वो तो तेलुगु में बोलते हैं नलताचु बोलते हैं। एक बार और बता दिए। समग्र गरल महातरुणार्क रस, गरल तरुणार्क रस, तरुणार्क, उसमें जो है ना वो ब्लैक स्नेक का इक्वल पार्ट होता है बाकी द्रव्यों का। मैं कल जो है ना, अगर वो उसका फार्मूला पूरा मैं बताऊंगा, बहुत छोटा कंसाइज्ड फार्मूला। अगर वो कहीं प्रस्ताव और उपयोग करे सो कहीं रहे, तो मैं ये सोचता हूं कि क्योंकि अपने यहाँ विश्व को अमृत जैसा बनाए ऐसे योग है, लेकिन कहीं ये ट्राई नहीं करे। और जहां तक कि अभी 2-3 डिकेड से इतना स्टंट शायद वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काफी लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। लेकिन आयुर्वेदिक पर ध्यान दे करके ऐसे दवाएं भी है, ऐसे फॉर्मूले भी है जहां उपयोग कर सकते हैं। जहां तक कि अपने सुनने में आता है हृदयार्णव रस, नागार्जुनाभर रस, ऐसे हो सकता है, लेकिन इसका नाम सुनते ही तो भयंकर होता है। इसमें 2 फॉर्मूले हैं, एक विदाउट पॉइजन, दैट ब्लैक स्नेक का वो रहे, एक महातरुणार्क रस एक है, समग्र गरल महातरुणार्क रस, समभाग गरल महातरुणार्क रस, ये 2 फार्मूले हैं। तो इसको कभी उपयोग करे, मैं ये सोचता हूं कि ये पॉइजन का जो है कोलेस्ट्रॉल जम करके और स्टंट डालने का हालत तक ले ही नहीं जाएगा। और उसमें फार्मूला में मेरे यहाँ तो वैद्योग रत्नावली वो इमकॉप्स वालों ने पब्लिश करे, सो उसमें मैं फार्मूला देखा और तुरंत डिपो को फोन करके पूछा कि ये मिलता है क्या? सर कब ही वो बंद हो गया। लेकिन अपने यहाँ फार्मूला इतने पड़े हुए हैं जो है ना, इसके पीछे मॉडर्न मेडिसिन टाइप के पीछे भागते भागते जा रहे हैं। क्यों हम लोग नहीं रख सक रहे हैं? मैं ये बोलता हूं कि मुझे पूरा उम्मीद है कि टोटली हमारा सिस्टम में even how to eat, how to roam and all these things are instructed. How do we become a sickful for modern medicine? What I say, that means we have got our own system, but we have not touched and we have not gone to our medicine. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू। बट पूरे विश्व में ये बातों से एक आइडिया आ गया कि हम एक वेबिनार सर्प विष पे भी करेंगे। आयुर्वेद में सर्प विष यूज होता है कि नहीं? जब विषों की बात चल रही है तो हम अभी स्थावर पे चल रहे थे, जंगम विष पे भी आ जाए तो हम सर्प विष की भी बात करेंगे कि इज देयर एनीबॉडी हु इज यूजिंग सर्प विष इन चिकित्सा? नहीं, आपसे ज्यादा कौन समझेगा इसको? सर मैंने ये बात इसीलिए कही थी कि बद्रीनाथ जी पर जो स्थावर जांगम का ही तो दिखाया गया था ना, कि वहां पर सर्पशिला है तो वहां पर जो जांगम विष के विषधर हैं वो स्थावर विष के उपलब्धता के कारण वहां से विषहीन हो जाते हैं। ये बात और दुर्गा कवच में भी ये चीज आई है, स्थावरम जांगम चाहे उन्होंने पूरा ही इसको बताया, तो उसके लिए निराकरण के लिए देवी पाठ ही है। तो आपका डॉक्टर डोमर साहब का जो सजेशन आया, मैं समझता हूँ विश्व में कहीं कोई इस समय ये बनाता नहीं होगा, और स्टेंट जो है वो इंडिया के और फॉरेन के उससे कम कीमत में मिल जाते होंगे और वो इंस्टेंटली वो इंसान को जीवन दे देते हैं। नहीं, वो आईसीयू में यदि हम किसी को सर्प विष देने जाएंगे वो हम लोगों को वही अरेस्ट कर लेगा, पहले अरेस्ट करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो जरूर वो अगर अटैक से ना मरता हो तो ये आयुर्वेद वाले जरूर मार देंगे, इसीलिए आए हैं आईसीयू के अंदर। वो तो और मुश्किल हो जाएगी, खाल बचाना मुश्किल हो जाएगा। अग्निहोत्री जी, यहाँ पर विष का जो है ना थोड़ा सा मैं रखता कि विष का अगर मुख से खाए वो हार्म नहीं होता है, अगर वो विष का डस दिए तो तुरंत मौत हो जाता है। ये मैं आसानी से बता सकता हूँ।
तभी तो बहुत सारे विश्वाण हम लोग लेते रहते हैं, विश्वाणी और विश्वाण लेते हैं और आघात फेटल नहीं होता है। एकदम नहीं होता है, हो सकता है मस्त हो मुखमार्ग सकता है। और श्रवणेंद्रिय के द्वारा, ये दोनों चीजें लेते हैं ना, श्रवणेंद्रिय से भी लेते हैं तो बच जाते हैं। ये डर की बात हो सकता है बहुत अच्छा विष के लगा बारे सर, में। आज का बहुत अच्छा रहा चर्चा। मैं आशा करता हूँ हम लोग कल 8:30 बजे मिलेंगे। बस कृपा कीजिएगा रात को 10 बजे सो जाऊं, इतनी कृपा कीजिएगा। अब तो आपने एक्सटेंशन कर लिया 2 घंटे का, 8:30 बजे से 10:30 कर लिया है। जय हो, अच्छा, जय प्रणाम हो, सभी जय को, हो। प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।